Hello students, welcome back to my channel Incredible Scholars। और अपने इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग दैट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। Power sharing is an integral part of democratic setup. You know that within the democracy, the power always vests with the people. And the people, they share their power along with their representatives who are getting elected through elections by the people, and then they form the government. Within the government, we find that the power is again shared in between its different organs. Again, within a federal setup like that of India, we find that the power is shared in between the governments at different levels. Besides that, within the democratic setup, we find that there are different political parties. So the power is shared among the political parties, as well as the movement, as well as the pressure groups. Then the power is also shared among the different social groups. So in this chapter, we'll be discussing about importance of power sharing within a democratic setup, यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होता है, हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द पावर शेयरिंग व्हेन इट इज बीइंग रिजेक्टेड विद इन अ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स आउटकम, एंड दिस विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू अ केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। राइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एथनिक कंपोजिशन in Belgium, the population in Belgium, as well as we'll be discussing about the ethnic composition of population in Sri Lanka. So Belgium starts with Belgium. Belgium is a small country, a small country in Europe. Right, its neighboring countries are Germany, the Netherlands, Luxembourg, and France. Within this country, the population is divided into two major linguistic groups: the French speakers and the Dutch speakers. The Dutch speakers who are 59% of the population, 59% of the population, and mainly
living in the Flemish region. The Flemish region. Another group that is of the French speakers who are 40% of the population and mainly living in the Wallonia region. 1% are the German speakers. The German speakers, they are only 1% of the population and living in both the regions. यानी कि दोनों ही regions में, Flemish region में as well as in the Wallonia region, in both the regions they are living. In the capital city of Brussels. Brussels is the capital. The ethnic composition is quite different. Here we find that 80% are the French speakers and rest 20% are the Dutch speakers. So these are the two major ethnic groups or the linguistic groups within the country of Belgium. Right? Here we must know the meaning of ethnic also. What do you mean by ethnic? So ethnic is basically the groups of people who believed that they have their common ancestors, and this belief is due to similar culture or physical appearance. So this is what about the ethnic composition in Belgium, right? So here we must remember that this is a small country in Europe. इसकी जो population है वो करीब हरियाणा की population की आधी है, करीब 1 करोड़ है, and area that is similar to हरियाणा. और ये इसके जो neighboring countries हैं, they are Germany, the Netherlands, Luxembourg and France. यहाँ पर दो major ethnic groups हैं. पहला डच स्पीकर्स का जो 59% है पॉपुलेशन का और मेनली फ्लैमिश रीजन में रहते हैं. दूसरा ग्रुप हमारा फ्रेंच स्पीकर्स का है जो करीब हमारे 40% है पॉपुलेशन का एंड दे आर मेनली लिविंग इन द वेलोनिया रीजन. द जर्मन स्पीकर्स दे आर ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे आर यू कैन से लिविंग इन बोथ द रीजन्स. कैपिटल सिटी यहाँ के ब्रुसेल्स है और कैपिटल सिटी के अंदर 80% हमारे फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% हमारे डच स्पीकर्स हैं. एथनिक दिस टर्म इज बेसिकली यूज फॉर द ग्रुप्स ऑफ पीपल. ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो ये बिलीव करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वज सेम है, कॉमन है. और ये जो उनका बिलीफ होता है, ये जो उनका विश्वास होता है, ये इस पर बेस्ड होता है कि या तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस सेम होती है और दे हैव द कॉमन
history. That means the common cultural past. Now, during the 1950s and 60s, there were the conflicts, the tensions were there in between the French speakers and the Dutch speakers in Belgium. उसका मेन रीजन क्या था? That though the French were in minority, फ्रेंच जो है वो वहाँ के पॉपुलेशन में उनका प्रोपोर्शन या उनका परसेंटेज कम था. दैट मीन्स दे वर इन माइनॉरिटी, बट दे वर प्रॉस्परस एंड एजुकेशनली दे वर एडवांस्ड. क्योंकि बेल्जियम के अंदर जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसका बेनिफिट उनको मिला, बिकॉज इन द initial years what happened, that the government was mainly under the domination of the French speakers, the French leaders. तो अल्टीमेटली इसका फायदा फ्रेंच कम्युनिटी को भी मिला, और हालांकि वो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में उनकी परसेंटेज कम थी, लेकिन वो एजुकेशनली एडवांस थे और साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस थे. And this had somewhere led to the tension in between the French speakers and the Dutch speakers in Belgium during the 1950s and 60s. Now, how did the Dutch leaders, they had dealt with all these conflicts, with the differences which arose between the two communities, that we'll be discussing later. We are taking here one more case study, the ethnic composition of Sri Lanka. So Sri Lanka, I think all of you know that this is a neighboring country of India. The southern neighbor of India, neighbor of India. Population almost equals to, population is almost equal to the population of Haryana. If we talk about the ethnic composition here, what do we find? In Sri Lanka, there are 74% Sinhala speakers. यहाँ पर 74% सिंहाला स्पीकर्स थे, और they are the followers of Buddhism. Then 18% are Tamils who are divided into two subgroups. The Sri Lankan Tamils, or the native Tamils, who are 13%, and rest are the Indian Tamils. ये इंडियन तमिल्स वो थे जिनके एंसेस्टर, जिनके फोर फादर्स जो हैं, और ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड श्रीलंका चले गए थे टू वर्क ऑन प्लांटेशंस.
as endangered. Right? Then Tamils are mainly concentrated to the north and eastern parts, north and eastern parts of the country, of the country, and they are the followers. वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? दे आर द फॉलोअर्स ऑफ either Hinduism और इस्लाम, यानी कि वो हिंदुइज्म या इस्लाम रिलीजन को वो फॉलो करते हैं. रेस्ट 7% are Christians who are both the Sinhala as well as the Tamil speakers. Like Belgium, there were also the tensions in between the two major linguistic groups, the Sinhala speakers and the Tamil speakers. Now, how did the Sri Lankan government dealt with these conflicts? We'll be discussing about it now. Now, let us discuss about Sri Lanka. Majoritarianism in Sri Lanka. What do you mean by majoritarianism? Actually, majoritarianism, it is a belief that the government can rule the country as per the wishes of the majority, even by ignoring the demands of the minorities. यानी कि ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म का जो बिलीफ है, ये कहता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली रूल कर सकती है, और इस रूल को करने के लिए, यानी कि इस तरह से शासन करने के लिए, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगर जो डिमांड्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनका कल्चर है, अगर उसको वो इग्नोर भी करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. सो व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका? Majoritarianism in Sri Lanka. So this we are discussing. First of all, Sri Lanka got independence in 1948. राइट? श्रीलंका को जो इंडिपेंडेंस मिला वो कब मिला? 1948 में. And after independence, elections were held in Sri Lanka. A democratic government came into power. अब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म हुई,
Soon this government came under the influence of the majority Sinhala leaders. The democratic government that came into power in Sri Lanka came under the influence of the majority Sinhala leaders and introduced several majoritarian steps there. कुछ मेजोरिटेरियन स्टेप्स उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस किए, लाइक they made Sinhala as the only official language. Thus disrespecting the Tamil. Right? Second, जो सिंहला जो स्पीकर्स थे, they were preferred in the university positions as well as in the government jobs. यानी कि गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो किया, जहां पर सिंहला स्पीकर्स को यूनिवर्सिटी पोजीशंस में और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रेफर किया गया. सो द गवर्नमेंट followed preferential policies for Sinhala speakers in university positions and government jobs. गवर्नमेंट जॉब्स में और जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी उसमें सिंहला स्पीकर्स को उन्होंने प्रेफर किया. यानी कि अगेन द तमिल स्पीकर्स दे वर इग्नोर्ड, they were not given a due respect, they were not given equal opportunities of getting education as well as to get the government jobs. Then in 1956 a new constitution was introduced that made Buddhism as the only official religion in Sri Lanka. So this was what happened, that again they had ignored the cultural identity, the cultural beliefs of the Tamils, because we know that the Tamils, they were mainly either the followers of Hinduism or Islam. और यहाँ पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया,
केवल और केवल बुद्धिज्म को उन्होंने एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि अब श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो केवल और केवल बुद्धिज्म को क्या करेगी, वो प्रमोट करेगी, उसको प्रोपेगेट करेगी और उसको फॉस्टर करेगी। Now, how did the Tamils react to these majoritarian steps? Reaction of Tamils to majoritarian steps. Majoritarian steps, or you can say the outcome of majoritarianism. Now what happened here? Obviously we had discussed the three different majoritarian steps taken by the government of Sri Lanka. पहला क्या था, उन्होंने सिंहला को केवल और केवल अकेली एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी और जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उसके लिए केवल और केवल उन्होंने सिंहला लीडर्स को ही, सिंहला एप्लीकेंट्स को ही उन्होंने प्रेफर किया। एंड थर्डली, दे हैड डिक्लेयर्ड Buddhism as the only official religion. So this was what happened. A feeling of alienation, a feeling of separation or alienation was developed among Tamils, among the Tamils. They began to feel, उनको वो क्या चीज फील करने लगे कि भाई जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें सिंहला लीडर्स का डोमिनेशन है, वो उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर या उनकी डिमांड से बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, उनके लिए वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। सो नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, none of the political parties led by the majority Sinhala leaders were sensitive to their language and culture, right? They felt that they were denied from getting equal opportunities of education and government jobs. राइट? तो यहां पर जब उनको ये लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें सिंगला लीडर्स की मेजोरिटी है, उनके लिए, उनके कल्चर के लिए, उनके लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव नहीं है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स से उनको डिनाई कर दिया गया है, तो दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, they formed their own political associations or parties and demanded
demanded one, Tamil should be made the second official language. उन्होंने ये डिमांड रखी कि तमिल को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। दूसरी उन्होंने डिमांड रखी इक्वल अपॉर्चुनिटीज of getting education and government jobs and thirdly more autonomy, that means more powers to the governments of northern and eastern states। जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पर तमिल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उन रीजन की गवर्नमेंट्स को, उन स्टेट्स की गवर्नमेंट को उन्होंने ये डिमांड किया कि ज्यादा पावर्स दी जाए। बट द श्रीलंकन गवर्नमेंट हैड रिपीटेडली रिजेक्टेड, डिनाइड टू कंसीड दीज डिमांड्स। उन्होंने इन डिमांड्स को पूरा करने से बार बार मना कर दिया। सो फाइनली व्हाट हैपेंड? फाइनली द Tamils demanded for a separate Tamil Eelam. They began armed struggle by forming a militant organization LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam. What was the end result? The tensions between the Sinhalas and the Tamils intensified, that led to the beginning of civil war in Sri Lanka। इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? वहां पर सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। सिविल वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक ही कंट्री की डिफरेंट जो कम्युनिटीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स में, फाइट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि दे वर इन वॉर। सो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेजोरिटेरियन प्रैक्टिसेस इन श्रीलंका। यानी कि आप कह सकते हो यहां पर पावर शेयरिंग को पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया। पावर शेयरिंग वॉज नॉट accepted. That means the majority Sinhala leaders, they were not ready to share or distribute the powers with or to the Tamils. तो स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा
द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, और साथ साथ हम इसके प्रूडेंशियल और मोरल रीजन और पावर शेयरिंग भी डिस्कस करेंगे, क्यों हमको पावर शेयरिंग जरूरी होती है विद इन एनी डेमोक्रेसी, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन, if you have not subscribed my channel, please subscribe it, follow it, refer to your friends, and watch the videos to get more and more relating to the facts of this chapter. So till then, happy learning. Thank you.